Hello everyone and welcome to the series called as Concept Ka Khel. Let's first of all discover what Concept Ka Khel is all about. Concept Ka Khel is identifying the concept behind an MCQ. क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के सब्जेक्ट के और भी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के। हर क्वेश्चन के पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है। इफ वी अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन बिकम्स इजी। फॉर एग्जांपल, इफ आई से फोरेंसिक मेडिसिन, हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। वी हैव लीगल सिस्टम, वी हैव फोरेंसिक ट्रॉमेटोलॉजी, वी हैव सेक्सुअल ऑफेंसेस, वी हैव फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, वी हैव फोरेंसिक पैथोलॉजी, वी हैव क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और हमारे एग्जामिनेशन में इन वैरायटी ऑफ सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट के खेल में मैं आपको क्या शोकेस करना चाहता हूँ? आई वांट टू शोकेस द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच अ स्टूडेंट शुड नो, जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस होके आते ही आते हैं, राइट? Once we understand what is the concept that an examiner wants to know, answering of question becomes easy, राइट? सो कॉन्सेप्ट के खेल में हम क्या देखने वाले हैं? कॉन्सेप्ट के खेल में हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस देखने वाले हैं जिसमें नंबर वन, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड होगा कि आज का वीडियो किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। नंबर टू, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, दैट विल बी एडेड इन द वीडियो। एंड नंबर थ्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आए हैं, सो दैट वी कैन कोरिलेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन कि एग्जामिनर किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में पूछता है। इस सीरीज की बेनिफिशरीज कौन है? आप सारे स्टूडेंट्स, बट पर्टिकुलरली दोज हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग नीट पीजी 2024 और INI-CET 2024। लेट्स बिगिन फॉर ऑल दो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट का खेल। और आज के सेशन में जो हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज splitting of skin in blunt force, right? This is commonly called as split laceration also, okay? So the first concept we are understanding is forensic traumatology, split laceration. So let's see what is the mechanism of its production. So mechanism of its production is that if the skin is pressed or crushed, if the skin is pressed or crushed between two blunt or hard surfaces, that results in what is called as split laceration. So split laceration is basically generated because of the crushing or pressing of the skin between two hard surfaces, right? Now, second information that is very critical to understand split laceration is what are the areas of body where these split lacerations are commonly seen. So what are the areas of the body where they are commonly seen? All we need to remember is bony prominences of the body. Let's see what are the common bony prominences of the body and what do we mean by bony prominences of the body. Where the bone is in proximity with the skin, the intervening connective tissue between the bone and the skin is negligible or very scanty. Such areas of the body are scalp, forehead, facial area, that is area of zygoma, right? Then we have chin also, elbow, wrist, knee, and shin, right? The area of tibial prominence. So these are some areas of the body where the bone is in proximity with the skin.
These are the areas where we are expecting split lacerations to develop. And why do they develop? Because the skin gets pressed और क्रश्ड बिटवीन टू ब्लंट सरफेसेस. तो अब ये समझते हैं कि एक तो सरफेस वो हो गया, या एक तो वेपन वो हो गया जिससे हम बॉडी पे हिट कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, राइट. तो दूसरा हार्ड सरफेस कौन सा है? दूसरा हार्ड सरफेस जो उस सरफेस के नीचे बोन है वो ही है, राइट. तो कंसिडर करिए स्कैल्प. नाउ स्कैल्प के नीचे स्कल है, द बोन इज इन प्रॉक्सिमिटी विद द स्कैल्प. ऊपर से किसी ने अगर डंडा मारा, द स्कैल्प की जो स्किन है दैट इज गोइंग टू बी प्रेस्ड एंड इट स्प्लिट्स ओपन. दैट्स कॉल्ड एज split laceration. Same is true for forehead, same is true for knee, same is true for elbow, same is true for wrist and other areas of bony prominences. Okay, क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात है स्प्लिट लैसरेशन की कि ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसका नॉर्मल लैसरेशन से कोई डिफरेंस है क्या, राइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम ए normal laceration? And the difference is split lacerations, the margins are very regular. Say suppose if I draw a laceration for you, a normal laceration is something like this. The opening of the skin leading to splitting of the skin and the subcutaneous tissue. The margins are irregular. So the hallmark of a laceration is irregularity of margins. The margins are irregular. But in split lacerations, the margins are fairly regular. आइए कुछ split lacerations की photograph देखते हैं. So if you see this photograph number 1, there is a laceration which is present on the scalp, and you can see the margins here, they are very regular. Irregularity नहीं दिख रही है प्राइमरी लुक में. पहली बार जब हम उसको देख रहे हैं तो हमें इरेगुलर मार्जिन्स नहीं दिख रहे. साइमल्टेनियसली दूसरा रीजन देखते हैं जो फोरहेड पे है. यू कैन सी मच बेटर हेयर. इट लुक्स लाइक कि किसी ने वहां पर कट कर दिया है. इट रादर लुक्स लाइक एन इनसाइज वुंड विच इज गिवन बाय अ कट. एंड दैट इज व्हाई, because the margins of these lacerations are very regular, they are also called as incised looking lacerated wound. They are also called as incised looking lacerated wound. They are lacerations which are produced by hitting of blunt weapons on the body, but they look like incision because their margins are regular. If this is an information that you do not know very well, you may count it as an incised wound, which will be a product of a sharp cutting weapon, rather than actually counting it correctly as a lacerated wound. And this is the concept that the examiner wants to ask you from the question, that क्या स्टूडेंट को ये पता है कि अगर बोनी प्रोमिनेंस पे बॉडी के ओपन वुंड है जिसके मार्जिन्स रेगुलर दिख रहे हैं, वो एक लैसरेटेड वुंड हो सकता है और इनसाइज वुंड नहीं. अगर ये इंफॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होगा, वी मे बी inclined to note it as an incised wound, and this concept has been asked in the questions in our NEET PG and INI-CET examinations previously. तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के MCQ देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क रहता है इस कॉन्सेप्ट पे बेस. So पहले एक PYQ INI-CET एग्जाम में आया है. Let's see that PYQ. The PYQ is very straightforward. There is a patient who is brought to OPD with injuries. A lacerated wound measuring about 3 centimeter into 1 centimeter into bone deep, right? Because lacerated wound एक 3-dimensional wound होता है, तो length, breadth और depth उसकी important है. Is noted on the scalp. Now इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाना चाहिए that the area is very important. It is noted on the scalp. This is an area of bony prominence of the body.
Which of the following is the correct mechanism of injury? नाउ आई एम नॉट डिनाइंग कि स्कैल्प पे किसी चाकू से, किसी ब्लेड से या किसी और शार्प ऑब्जेक्ट से वार नहीं हो सकता जिसकी वजह से एक कट या इंसिजन स्कैल्प पे नहीं आ सकता. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट इफ एन एग्जामिनर इज पर्टिकुलरली आस्किंग यू दिस कॉन्सेप्ट, he wants to know that do you know that there is something called as incised looking lacerated wound, right? और क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, which is the for which of the following is the correct mechanism of the injury? We have already seen in our discussion the mechanism of the injury is soft tissue crush between hitting weapon and bone, and that's our answer, right? Not what is given. If you will see in option number 4, that is hitting by semi sharp object, वो आंसर नहीं है, right? Correct answer क्या है? Soft tissue crush between hitting weapon and bone. That's the mechanism of development of incised looking lacerated wound, that is split laceration. एक और क्वेश्चन देखते हैं. PYQ हमारे नीट पीजी एग्जामिनेशन में आया था, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था. एक फोटोग्राफ दी हुई है जिसमें हमें पूछा हुआ है कि इस इंजरी को आप आइडेंटिफाई कर दीजिए. नाउ इस फोटोग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, क्रूशियल चीज हमारे लिए क्या है? एरिया of the body. Can you identify the area of the body? You can see that we can see certain scalp hair around the lesion. So this area looks to be area around forehead. Again, bony prominence of the body. And if you look at the lesion, it again looks like किसी ने forehead पे cut किया है. But we have already talked about the concept that whenever we have an incised looking lesion on the bony prominence of the body, we need to think about कि एग्जामिनर हमसे क्या कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है. हमारे पास ऑप्शन क्या है? इंसाइज्ड लुकिंग लैसरेटेड वुंड, इंसाइज्ड वुंड, लैसरेटेड लुकिंग इंसाइज्ड वुंड और लैसरेटेड वुंड. सो मोस्ट appropriate answer according to the anatomical area of the body is incised looking lacerated wound, right? So ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं. अगेन आई वुड लाइक टू tell all my students that if you ever find a question जहाँ पर एक लीजन है, वो बॉडी के बोनी प्रोमिनेंस पे है, एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है what is split laceration, which is also called as incised looking laceration. ऐसी चीज़ों के साथ में मैं आपके साथ में आता रहूँगा हमारे नीट पीजी और INI-CET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. मेरे चैनल पे मुझे फॉलो करते रहें. मेरे इंस्टा हैंडल पे भी ये चीज़ें आप देख पाएंगे.